friends. I welcome you to a new session of VAIRAGYA. So in this class we will study and discuss about various facts and figures of the political changes which were being seen in the Indian polity. So we saw there was Indian Council Act of 1892. There was a revolt in 1857 1857 के रिवोल्ट के बाद एक नया कानून लाया गया, क्वींस प्रोक्लामेशन इन 1861 दैट ब्रिंग मेनी चेंजेस in the structure of Indian political system, and the control of power directly goes to the hand of the Queen. Then comes Indian Council Act of 1892, which brings about the majority of officials retained and non-official members of the Indian Legislative Council and the nomination of the Bengal Chamber of Commerce BCC का nomination हो जा रहा है and Provincial Legislative Council भी बना दी गई. So 1892 में अब state legislations भी बनने शुरू हो गए. Provincial Legislative Council plus Bengal Chamber of Commerce बन गया. And non-official member of provincial council were to be nominated by certain local bodies such as universities, district boards and municipalities. ये कैसे nominate होंगे? District boards और municipalities के द्वारा. Then we see the beginning of representative system in India. Indian people का representation अब शुरू हो चुका है. अब डेमोक्रेसी फॉर्म होनी शुरू होगी. डेमोक्रेसी कब फॉर्म होगी? जब आपके प्रतिनिधि योर रिप्रेजेंटेटिव शुड सिट इन द गवर्नमेंट बिल्डिंग पार्लियामेंट एंड मेक लॉज फॉर योर वेलफेयर, फॉर योर बेनिफिट ऑफ पीपल. सो काउंसिल हैव द पावर टू डिस्कस द बजट एंड एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ एग्जीक्यूटिव. ये सारी चीज़ें होगी 1892 में. So there is a mind map which shows how many topics you have to read and at what level. So we have discussed so far 1773 Act, 1781, Pitt's India Act and Charter Act of 1793, 1813, 1833, 1853. Then we are studying 1892 Act. Then we'll study the Parliamentary reforms. Now moving ahead. So Indian constitution formed with the large history of historical underpinnings as well as changes in the socio-political structure. अब कैसा political system हो रहा है? अब constitution यानी कि modern western law बनने शुरू हो गए हैं. इंडिया में acts बन रहे हैं. regulating act, Indian Independence Act, Queen's Proclamation Act of 1861, 1892 and now 1909 Parliamentary reforms. So let us see. So there comes the Parliamentary reforms. So Indian Council Act of 1909 or Parliamentary reform created a new system in the Legislative Council. At the Provincial Legislative Council, non-official members to be in the majority. Provincial Legislative Council बन गई है. ये कौन है? ये मॉर्ले हैं. अब वॉइसरॉय हो रहे थे एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो रहे थे. क्यों? क्योंकि क्वीन ने प्रोक्लामेट किया कि पावर शुड रिसाइड विद द क्वीन नॉट द कंपनी. सो पावर इज डायरेक्टली गवर्न बाय द ब्रिटिश क्राउन. अब ब्रिटिश क्राउन में कैसे गवर्निंग कर रहे हैं? एक वाइसरॉय इज देयर एंड अनदर इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. सो फॉर द फर्स्ट टाइम एलिमेंट ऑफ इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टार्टेड एंड एट द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉन ऑफिशियल मेंबर टू बी इन मेजॉरिटी. इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? बंटवारे की राजनीति. डिवाइड एंड रूल वाज द की प्रिंसिपल ऑफ ब्रिटिशर्स टू रूल इंडिया. नाउ दे आर प्रोवाइडिंग मुस्लिम्स अ सेपरेट इलेक्टोरेट. सो इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय, गवर्नर
Satyendra Prasad Sinha become the first Indian to join Viceroy's Executive Council. So remember this name, Mr. S.P. Sinha became the first person to join the Viceroy Executive Council. Then, what were the key features of 1909 Act? It increased Indians in the government of British India. So ब्रिटिश सेक्रेटेरिएट में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब इंडियन मेंबर्स को शामिल किया जा रहा है. इट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, रिजर्वेशन, देयर शुड बी सेपरेट पोस्ट फॉर मिनिस्टर्स फॉर मुस्लिम मेंबर्स. इट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म. अब कम्युनिज्म दैट मीन्स डिवीजन बिटवीन हिंदू, मुस्लिम्स, सिख, इस्लाम्स, जैन्स, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया है, एंग्लो इंडियंस ऑल्सो. यहाँ पे बातें शुरू हो गई हैं कि ये सारी चीज़ों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए. तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट 1919 एक्ट इन्हें भी रिजर्वेशन मिलेगा. सो लेजिस्लेटिव काउंसिल एट सेंट्रल प्रोविंस वेयर टू हैव 4 कैटेगरीज ऑफ मेंबर. लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने टाइप के मेंबर्स होंगे? 4 टाइप्स ऑफ मेंबर्स टू बी देयर. And revised the Indian Council Act of 1861 and 1892. So 2 मेंबर्स को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के काउंसिल में शामिल किया गया. एक थे एसपी सिन्हा. Remember this. Now moving ahead. Then comes the 1919 Act of Montagu-Chelmsford. Montagu was the Governor General and Chelmsford the Secretary of State. तो इन्होंने क्या लाया? एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस पे स्ट्रेस किया बाय मेकिंग हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंदन. अब लंदन में भी यानी कि इंग्लैंड में एक ऑफिस बन गई हाई कमिश्नर की. दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजंस एंड मैटर्स ऑफ इंडियन डोमिनियन. एंड लेजिस्लेचर बिकम बाईकैमरल इन नेचर. फर्स्ट टाइम कैसा हो रहा है? बाई कैमरल, अपर हाउस, लोअर हाउस. सो फॉर द फर्स्ट टाइम सिख रिप्रेजेंटेशन वाज प्रोवाइडेड ऑन कम्युनल लाइंस. सिख को रिप्रेजेंटेशन दिया गया. अर्लियर वी सॉ मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन 1909 एक्ट. एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नाउ बी पेड बाय द ब्रिटिश रेवेन्यू. अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो सैलरीड पर्सन हो गए. And diarchy in provinces by dividing subjects of administration between official members and elected members. States में और provinces में क्या आ गई हैं? Diarchy, division of power between elected representatives. That means legislatures and the executive. So that process was called as diarchy and it was asked in UPSC 2016 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड BPSC में भी पूछी गई है ये चीज़ें. सो नोट्स करते जाएंगे. नाउ लेट अस सी दैट व्हाट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इट एडेड. यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएगी पहली बार इंडिया के लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए. यानी कि ICS ऑफिसर जो बनते हैं, जो अभी आप IAS, IPS, IRS बन रहे हो, फॉर दैट मैटर दैट वेयर इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिसर, उनके लिए ICS बनाई गई. एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी, जो कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट कर दिया गया प्रोविंसेस में. देन एक्सपेंडेड पार्टीशन ऑफ इंडियंस इन द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट में इंडियंस का भी पार्टिसिपेशन एक्सटेंड हो गया. देन एक्ट कॉल्ड एज द Montagu-Chelmsford रिफॉर्म establishes High Commissioner Office in London, gave women the right of vote. अब क्या पार्टिसिपेशन हो रहा है यहाँ पे? सिख का प्लस वुमेन का. एंड ऑलरेडी मुस्लिम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन वोट. सो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए फर्स्ट मेजर यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1990 एक्ट में, व्हेन वुमेन आर गिवन द राइट टू वोट फॉर देयर डेमोक्रेटिक मेजर्स. So government subject were divided into reserved and the transferred list. अब यहाँ पे रिजर्व लिस्ट किसके पास जाएगी? ऑब्वियसली वायसराय, एक्टिंग एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन. तो वो प्रेसिडेंट का रूल कर रहा था. वायसराय तो उसके पास रिजर्व सब्जेक्ट होगी.
and transfer subject to the provinces. Okay, so transferred subjects में state government, state पुलिस, स्टेट इंडस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें दी गई. देन कम्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. अब पीछे में क्या चल रहा है, साइमन कमीशन आ गए. साइमन कमीशन पुट हिज रिपोर्ट कि इंडियंस को तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन ही फ्रेम करने नहीं आ रहा है, दे आर नॉट एबल टू रूल द country. So Stafford Cripps, A.V. Alexander, and Patrick Lawrence were the member, and they put forward the report to British Crown. Then started the round table conference, जहाँ पे गांधी जी को बुलाया जाता है कि आप कैसे गवर्न करेंगे इंडिया को, जहाँ पे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं पता है. पीपल आर नेवर अबाउट द रूल, पीपल डोंट नो हाउ टू फुलफिल द democratic rights, people are unaware about their duties. So ये सारी चीज़ें चल रही थी. Then comes Golmage round table conference first, round table conference second. Then the Government of India Act, which was the root of Indian Constitution, considering all India Federation of provinces and princely states at the unit, कि princely state और provinces भी काम कर रहे हैं. So state did not join the federation and didn't came into existence. Princely states ने join ही नहीं किया 1935 Act को, which provided the residuary power to Viceroy and abolishes the diarchy. जो diarchy मिल रही थी states को, separation of power था ना executive और legislature के बीच में, उसको खत्म कर दिया गया, and made the provinces to rule in their provincial autonomy. So जो किंग्स और क्वींस हैं अपने प्रोविंस के, वो रूल कर सकते हैं. अब देखिए कितनी चालाकी से ये एक्ट बन रहा है. एक तरफ ये दिखा रहे हैं कि हम डेमोक्रेटिक राइट्स भी आपको दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे रहे हैं. तो क्वीन और किंग जो राजवाड़े थे, जैसे कि जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के नवाब, कश्मीर के किंग, ऐसे जो भी किंग्स थे वे एक्टिव हो गए कि हमें अपने राइट्स चाहिए. We want our own government, not the democratic government. So it introduced the responsible government in the provinces and introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces. तो 6 राज्यों में bicameralism आ गई, यानी कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस. ठीक है. So there is a structure in this picture, आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में. So 1935 Act extended the principle of communal representation, providing separate electorate for the scheduled caste, labor workers, classes, Muslims and the other people. तो अब यहाँ पे रिजर्वेशन मिल रहा है प्लस वोटिंग राइट्स टू द डिप्रेस्ड क्लासेस, वर्कर्स, सिक्स, एंग्लो इंडियंस, है ना, क्रिश्चियंस को सेपरेटली दे आर गिवन वोटिंग राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द डेमोक्रेटिक सेटअप, प्लस प्रोविंसेस को भी ऑटोनॉमी दे रहे हैं. नाउ यू सी द एक्ट इज मेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द Crown Prince and Governor General of India and His Majesty representative as a regard relation with the Indian state, Commander-in-Chief of India and the Federation of India. That means it is considering India as a federal state. It means many states unite together to form a state. So it is making Governor General with his own power and administration of the federal affairs to the Governor General. Okay. So ऐसे करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट makes many changes in the existing system to bring out a constitutional mechanism on the western law, because democracy prevailed in the Europe and बहुत सारे principles exist करने शुरू हो गए थे. So divided powers between center and state, 3 लिस्ट क्रिएट हो गई, फेडरल लिस्ट,
प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिसे अभी आप देखते हैं शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया as union list, state list and concurrent list. Then it established All India Federation, Reserve Bank of India, Provincial and Joint Public Service Commission. ये क्या establish कर रहा है? एक central bank for the government funding, because RBI started working in the other countries, Iran, Iraq, Saudi Arabia, पाकिस्तान तो था ही नहीं, including northwest frontier provinces एंड म्यांमार, इन सारे स्टेट्स के लिए फंक्शन कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एंड इट क्रिएटेड अ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन. अब आईसीएस के एग्ज़ाम यहीं पे हो जाएंगे. एग्ज़ाम देने के बाद सिलेक्टेड पोस्ट पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भेजे जाएंगे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो स्टिल पावर लाइज विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी. Now we see it abolished diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy. ये क्या कर रहा है? डायरकी जो चल रही थी यानी कि दोहरा शासन, उसे टोटली एबॉलिश कर दिया प्रोविंस में. यानी कि ओनली द गवर्नर जनरल, द वाइसरॉय विल मेक रूल. देयर इज नो लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर डिसीजन मेकिंग. So it introduced the kingly majesty as provincial autonomy. It adopted diarchy at the center also. सेंटर में भी डायरकी अब ले आया. स्टेट से इसने हटा दिया डायरकी और कहाँ पे ले आया है? सेंटर पे. देन इंट्रोड्यूस बाईकैमरलिज्म इन द प्रोविंसेस. अब प्रोविंस में डायरकी को हटा के बाईकैमरलिज्म लाया गया. दैट मीन्स देयर शुड बी अपर हाउस एंड देयर शुड बी लोअर हाउस, विधान परिषद और विधानसभा, जो कि आप बिहार में देखते हैं और बहुत सारे राज्यों में आप देखते हैं कि देयर इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस इन द स्टेट ऑल्सो. एंड इट सेपरेटेड द इलेक्टोरेट्स एक्सटेंडेड टू डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन एंड लेबर. सो इसने क्या क्रिएट किया? सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि पृथक निर्वाचन पद्धति फॉर वुमेन, laborers and depressed classes, SCs and STs. तो उस टाइम ही इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फिर से स्ट्रेंथन किया. एंड दे अबॉलिश्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, क्रिएटेड 1858 एक्ट. 1858 एक्ट के द्वारा जो काउंसिल ऑफ इंडिया क्रिएट किया गया था उसको भी इसने एबॉलिश कर दिया. जो रिवोल्ट के बाद क्वींस प्रोक्लामेशन आया था, दैट पावर गोज टू द हैंड ऑफ क्वीन इन द डोमिनियन ऑफ इंडिया. So Act of 1935 abolish the power of Council of India Act of 1858. So Secretary of State was provided with a team of advisor. Then Reserve Bank of India established by this act, a central bank to govern the financial matters. It also established the Federal Public Service Commission, FPSC, and Provincial Public Service Commission and Joint Public Service Commission for the Indian Civil Services Examination to introduce a bureaucratic system by people of India. क्योंकि उन्हें पता था कि हम ही फाइट करेंगे और इंडिया के पीपल तो गुलाम ही रहेंगे. दे शुड डू व्हाट वी सेड, बिकॉज वर्ल्ड वॉर सेकेंड वाज गोइंग टू स्टार्ट इन यूरोप. सो उससे डर के ये सारे लोग इंडिया को अपना स्टेटस दे रहे थे. एंड दे वर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, जिन्होंने अपनी आर्मी बनानी शुरू कर दी थी. एंड रिवोल्यूशनरीज हु वर आस्किंग फॉर सोशलिस्ट गवर्नमेंट एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस. तो 1929 में इंडिया ने भी रावी नदी के तट पे जवाहरलाल नेहरू ने घोषित कर दिया दैट इंडिया शुड बी अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस. देन 1935 में इन्हें लग गया कि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो होना ही होना है, उससे पहले इंडिया को कुछ दे. तो इन्होंने चॉकलेट पकड़ाया. इंडिया शुड गेट हैप्पी विथ दिस लॉ दैट इंडिया को तो अब कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया, इंडियन पीपल हैव देयर फंडामेंटल राइट एंड पॉलिसीज
to make their representatives. यही तो होता है डेमोक्रेटिक इलेक्शन में कि आपको एक रिप्रेजेंटेटिव दे दिया जाता है through democratic setup. And now Indian people are realizing the fact that they are having their own government, but that was a pseudo or a fake government over India. Then World War II started, and it concluded with huge loss of British Empire. Allied forces as well as Axis power, they all fought well. An entire world was divided on the capitalist versus communist lines. Then in 1919 socialist revolution हो चुका था रशिया में. So India was created a huge uh, overleap over the British Empire by creating its own law by the India Independent Act of 1947. अब 1947 में जब क्लियर हो गया कि इंडिया अब डिवाइड हो जाएगा, वेदर इंडिया विल सर्वाइव और नॉट दैट डजंट मैटर, इन्हें पता चल गया कि ये जो देश बनने जा रहा है इसको तो हमने ऐसे डिवाइड कर दिया है कि यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान, यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान, यहाँ पे अफ़गानिस्तान एंड जूनागढ़ नवाब प्रिंसली स्टेट्स वेर आल्सो प्रोटेस्टिंग. तो ये कंट्री बन ही नहीं पाएगा एंड समहाउ दिस विल बी अ फेलियर स्टेट, है ना. हैदराबाद के नवाब दिस ऑल वेर आस्किंग फॉर देयर सेपरेट स्टेट, नेपाल सेपरेट स्टेट, म्यांमार, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज. But then somehow due to Vallabhbhai Patel and Jayaprakash, Dr. Ambedkar and Nehruji, India was formed under the Independence Act of 1947. So इसके क्या मुख्य provisions थे? The provision created two independent dominions of India, that is Pakistan with rights ceded to British Commonwealth. अब ब्रिटिश कॉमनवेल्थ थे वर्ल्ड वाइड, जो कि ब्रिटेन का पूरा संपूर्ण धन के रूप में गिने जाते थे. सो द कंट्रीज विच वेयर प्रीवियसली रूल्ड बाय ब्रिटिश वेयर कॉल्ड एज द ब्रिटिश sovereign states and the Commonwealth. So Governor General of each state are appointed by the King and on the advice of the Dominion Cabinet. So ऐसे करके सेपरेट कैबिनेट बनाया जाने लगा. Then it empowered the Constituent Assembly of two dominions to frame and adopt their own laws. यहाँ पे इनके कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई इंडिया और पाकिस्तान की, और इन्हें सेपरेट राइट्स दिए गए कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करो एंड गेट इंडिपेंडेंट. सो हियर वी सी द फोटोज ऑफ लॉर्ड Mountbatten, Muhammad Ali Jinnah and Pandit Nehru. So it was called as Mountbatten Plan. So abolition of office of Secretary of State of India was done. देखिए अब वायसराय को नहीं हटा रहे थे, but they introduced the removal of Secretary of State, जो कि लोगों के द्वारा, इंडियन पब्लिक के द्वारा संचालित था. वायसराय विल बी द सेम. कौन वायसराय? लॉर्ड माउंटबेटन. And it assigned dual function, that is constituent and legislature, to the Constituent Assembly formed in 1946. 1946 में Constituent Assembly बन गई. अब ये constitution body है, that is primitive of your संसद पार्लियामेंट की. The primary body or root body is Constituent Assembly. This assembly will endowed with the power to make the rules or constitution for the state of India. So it declared Dominion legislature as sovereign body. इंडिया को इसने क्या घोषित कर दिया कि ये sovereign body है with powers in the hand to make laws, rules, regulations for different caste, class, communities, and to provide justice to all the people and all the social sectors, to provide liberty of thought, expression, belief, and provide fraternity by establishing a social order.
सो ऐसे करके क्या बन गया, अब प्रीएम्बल की घटना हो रही है ना. देन आवर कंट्री गेट इंडिपेंडेंट and midnight of 1947 we got freedom and princely states, अब जो भी राजवाड़े थे उनको फ्रीडम दे दिया गया. now these princely states are asking for their independent states. अब जूनागढ़ के नवाब, हैदराबाद के नवाब, कश्मीर के नवाब, इन सबको समझाने की ज़रूरत पड़ी. दे नीड टू बी कन्फर्म, नहीं तो वो उन्हें नहीं समझाने पे उन्हें हड़काना पड़ रहा था कि आप इंडिया में मिल जाओ और अगेन द अदर टेरिटरीज विल फाइट बैक, बिकॉज अदर स्ट्रॉन्ग पावर्स भी मौजूद थे उस टाइम. सो देयर फोर दिस कंट्रीज गॉट इंडिपेंडेंट. बट द वर्च्यू ऑफ सोशल जस्टिस शुड रिमेन कॉन्स्टेंट. तो उसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर जी ने क्या बना दिया, preamble of constitution, which says that we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, that means self-dependent in all matters of decision, socialist, that means socialism should be main philosophy, and secular state should not have any religion, democratic and republic, and add secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought expression, belief, and worship, in which everyone is free to choose its religion, express his or her religion, belief, and faith, and equality in status and opportunity, and to promote among them all fraternity, that means brotherhood, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly on the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. हम भारत के नागरिक अपने देश को ये संविधान अर्पित करते हैं, जिसमें कि एसेंस ऑफ इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी देयर एंड पर्पस, संविधान का क्या पर्पस है, उसकी मूल धारणा क्या है, ऑब्जेक्टिव, how country should be ruled, how laws should be made on the socialist guideline to provide equal justice, and fraternity should be maintained. So Pandit Nehru passed the Constituent Assembly as the objective resolution. तो objective resolution पास किया गया नेहरू जी के द्वारा, which becomes the preamble of the Constitution of India. So preamble से भी कुछ questions आते हैं. So preamble constitute these keywords such as the democratic republic, that means the government by elected by the people, for the people, of the people, and by the people, that is a democratic government. And it also ensures the sovereignty, that means supreme decision making power lies in the hand of president, who is indirectly elected by proportional representation. And there is socialist state whose philosophy should be socialism, social welfare and upliftment of the deprived section, equal participation of different sections and Indians, that means a total country will be named as India. That is not a geographical identity only but a cultural nation. Then comes the objective resolution providing sovereignty, socialist, secular and democratic republic, and justice in social, economic and political order. What does justice mean to you? So there should be no discrimination in participation in government jobs. In villages we saw too many discriminations in sitting, in habit, in food, in jobs. So there should be no discrimination. There should be economic participation in which every sector or person can participate in each one of the economic activity, and there should be political participation through voting rights by universal adult franchise and uniformity of civil laws, that means uniform civil code. It also ensures liberty of thought, expression, belief, faith and worship towards the religion. Whatever faith one follows is allowed to follow his religion, whether it is Hindu, Muslim, Sikh, Jews, Jains, Parsi, Sikh or any community. And there should be equality of status and opportunity. That means no one should be discriminated on any ground.
elimination of untouchability, elimination of titles, Rai Sahab, Rai Durlab, Pandit Ji, Thakur Sahab, and prevalence of fraternity to assure the dignity of individual and ensure the brotherhood in the country of India with unity and integrity of the nation. So preamble is a part of constitution or not, many a time debate arises. But we all know that Keshwananda Bharati emerged a case in 1973 which proved that a Berubari Union case shows in 1965 में बेरूबारी यूनियन केस में क्या आया था? Preamble is not a part of constitution, so it cannot be followed. But in 1973, the bench of Supreme Court of India proved that the preamble is a part of constitution and it is the soul of the constitution, and the parliament within the core limits of basic structure doctrine. So इसका amendment भी parliament तभी करेगी जब तक basic structure doctrine fulfill रहेगी. And again we see the interpretation of the true spirit of constitution in LIC of India case in 1995, in which Supreme Court upheld that the preamble, which is said that integral part of the constitution. तो फिर से अपने पार्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रिपीट किया दैट प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. सो व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? देयर आर 21 की प्रिंसिपल्स, इसमें की 5 प्रिंसिपल्स हैं: जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक. These are the key structure or basic structure of constitution. So Keshwananda Bharati case held that preamble may be amended by the subject to the basic structure of the constitution. In other words, amendment should not harm the basic structure doctrine. जो मूलभूत चीज़ें हैं preamble की, उसको हार्म नहीं होना चाहिए by any amendment. So 42nd Amendment Act of 1976 added 3 more words in the constitution, that is socialist state, secular state and integrity, unity and integrity. So भारत की स्वयंप्रभुता, एकता और अखंडता को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जानी चाहिए, तब तक संविधान संशोधन किया जा सकता है. So this is the way Indian constitution can be amended to a certain view. So let us end the class by discussing some of the important questions and answers. So let us see some questions that can be asked. So what are the questions that are asked? Explain the working of Constituent Assembly in creation of Constitution of Free India. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया के लिए कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है? फ्री इंडिया. सो दैट मीन्स आप इसको स्ट्रक्चराइज कैसे करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क फॉर क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन by including the basic democratic and socialist philosophy. डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में फंडामेंटल राइट्स ऐड किए गए 6 टाइप्स के, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें डाली गई. सोशलिस्ट स्टेटस डाला गया इन विच freedom to propagate religion, follow one's belief, faith, worship. तो आप इसको
structurize करोगे, then you add sub dimensions. That this assembly work to ensure the justice to all the sections of society. Sections of society, and it created holistic view of national identity. कैसे इंडिया एक नेशन रहेगा, तो आईपीसी भी फॉलो होंगे, रूल ऑफ लॉ रहेगा, एंड सोसाइटी शुड बी वर्क इन एन इंटीग्रेटेड मैनर. ठीक है. So I hope you understand the questions and answer. If you write anything, just put it on my Telegram channel t.me/gsrevolt. So keep watching Vairagya channel. Stay tuned for the future programs. Thank you and have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.